recording. So please go to your manual. नहीं, मैनुअल को आप थोड़ा सा समझ लीजिए. आपके जो मैनुअल है इसके अंदर आप देखेंगे कई अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन. ओके, इसी तरह आप नेक्स्ट उस पे जाएंगे एंड इट सेज सेक्शन 2 कैलिब्रेशन एंड रैपो. सेक्शन 3 इसी तरह आप देखेंगे कि हर सेक्शन में एवरी सेक्शन स्टार्ट्स विद पेज नंबर 1. Okay, so as we are referring and going through this, I may say section 1 page 1, section 2 page 5. Okay, so हर section के अंदर page different आते रहेंगे. So I'll be referring to these sections. Now we will not be going in a logical order in the sequence in which this manual is set. So we may go from section number 2 to section number 5, for example, or to some other section. Okay, we'll keep coming back to different sections. So इसलिए इस उसके ऊपर नहीं रहेगा कि ये फलाना सेक्शन जो था, ये वाला सेक्शन हमारा मिस हो गया. We'll cover everything that's there. लेकिन we will not be following this sequence. Okay. Now go to page number 4. It is good to know that, and please read this. Okay, makes sense. Because होता क्या है, many times when people are learning these things, they think फलाने को ठीक कर दूंगा, अब फलाने को सही कर दूंगा, मेरे भाई के अंदर ये प्रॉब्लम है, अब मैं उसको NLP की टेक्निक से forget it. Okay, the first person you work with is yourself, your own self. Okay, first person you work with is your own self. Do not think about correcting the world before you correct your own self. Always start working on yourself first. ठीक है? Go to next page. It is important to know NLP is not magic. Yet the results you get with it are magical. Those who receive the greatest rewards are those who adopt the curious, playful attitude and commit to experimenting and applying what they learn each and every day. This is not something कि हमने यहाँ क्लास में कर लिया और 2 बार मैंने उसको ट्राई किया. And sometimes people do this कि like उसको किया मैंने जी 2 बार मैंने किया था, वो तो उससे तो कुछ नहीं हुआ. Okay, it is like मैं जी 2 दिन जिम तो गया, मैंने तो उठाया था, मेरे तो कोई मसल नहीं बने, बेकार की बात है सारी. Okay, it's the same. If people operate with that kind of attitude, they don't get any results in anything, by the way. Okay, आपके पास कोई पेशेंट आए, आप उसको कोई दवा दें, आपने उसको बोला जी तुमने 7 दिन खानी है. Okay, और वो दवा ले जाए और ले जाकर उसको रख दे ऊपर संभाल कर. उसके बाद में डॉक्टर साहब मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ आपकी दवा का. आपने खाई आपने दवा? नहीं खाई नहीं. Okay, what can you do? Nothing. Okay, और दवा का कसूर है, आपका कसूर है. कुछ तो प्रिस्क्रिप्शन जेब में रख लेते हैं. Exactly. And then say मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, आपकी प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर के आओ. Okay, it will not work. Nothing works until you do. Nothing gives you any results until you apply. Okay, and how often? Each and every day, every single day we have to use this. Then set daily practice goals that you can achieve alone or with someone. Each day focus on succeeding even in small areas of your life. Soon you may find yourself absolutely surprised and delighted to begin to notice how the other areas are changing too. And take credit for the changes you are making. Live, love and laugh. Enjoy each day to the fullest with passion and fun. Okay? एक आपके ज़हन में एक सवाल हो सकता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं मुझसे, जैसे does NLP work? Let me tell you right now, no, it does not. Okay, if you have this in your mind, will it work for me? Let me tell you, it will not. I'm telling you right now, it will not. NLP does not work. Okay, I've trained people over 27,000 hours in this, and I'm telling you, it doesn't work.
It's the person behind it that makes it work or not. Do you get this? First करो, दुनिया की बेहतरीन किताब कौन सी है? Which is the best book? दुनिया का बेहतरीन शहर कौन सा है? Okay? मक्का से मदीना से कुरान मजीद के नुस्खा लेकर आए, बेहतरीन किताब बेहतरीन शहर से लाए और उसको बेहतरीन जुज़दान में लपेटा और ऊपर रख दिया. Okay? Will it work for you? कोई फायदा देगी? अल्लाह का कलाम है, बगैर आपके मेरे अमल के फायदा देगा? फिर हमें रमज़ान में निकाल के इंशाअल्लाह उसको देखेंगे. उसके फिर मैंने तो रमज़ान में कुरान भी पढ़ा था मगर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ. ज़िंदगी में मेरे तो कोई तब्दीली नहीं आई. किसका कसूर है? Okay? And that's the thing. It is NLP does not work. It is the person doing it, using it, will make it work or not. You get this? Nothing works until you do. Remember this. Okay? So what is NLP? There's not much for you in terms of taking notes. Everything that I'll be talking about is somewhere in the manual, so you can close your manuals now. What is NLP? What do you think? Give me an idea. Yes. It is how language affects humans in their daily life. Language may be non-verbal or verbal. Okay. What else? It's dealing with the subconscious mind. Okay. Dealing with the subconscious mind. Okay. What else? Say anything, जो भी आपके ज़हन में, anything that you have. Yes, sir. In NLP, we use language in a way to program ourselves, to program our mind, I guess. Okay. So what is NLP? This is what we do in NLP. You're saying. क्या है क्या चीज़ है? किस बला का नाम है? Neuro-linguistic programming. Right. Neuro-linguistic programming क्या चीज़ है? आपके ज़हन में जो भी कुछ है, just tell me. I want to know. Before I give you anything, I want to know आपके ज़हन में है क्या? Okay? जो भी कुछ है. आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट, हमारे एक व्हाट्सएप पे मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एंड उसमें एक स्टूडेंट ने किताब शेयर की है. किसी ने इंग्लिश की किताब है, बहुत अच्छी बुक है, हाउ अवेकन द जायंट विद इन एंथनी रॉबिन्स की. उसका उर्दू में ट्रांसलेशन की है. अपने अंदर का जिन जगाइए. ओके, आई बिलीव ये किताब खूब बिकेगी. ओके, इस फॉर्म में जहाँ पर जिन जिन्नात हमजात कब्जे करने की चीज़ें, उसके अंदर अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर का जिन जगाइए, बेहतरीन टाइटल है. ओके, और सेलिंग अ बुक. ये अलग बात है कि पढ़ने वाला जब उसको पढ़ेगा तो उसको मायूसी होगी कि वो जिस जिन की बात कर रहा था और जो सोच रहा था वो चीज़ इसमें नहीं है. ओके, लेकिन लाइक आपके जहन में क्या है कि yes. So it is the study of the strategies that how language cause an impact on human life and our human experience. Okay. This is it. Good. What else? Anything? Yes. It's the language of the brain and how our brain is programmed due to the language of the brain. Okay. Not to reprogram it. Okay. Behaviors, attitudes. Okay. और कुछ? मैं आपको कोई बताता नहीं कि क्या नहीं. अभी कई साल पहले मेरे साथ हुआ ये कि मैं अपनी दीदी के साथ जा रहा था और रास्ते में गाड़ी में वो कार्ड्स डालते हैं. तो एक कार्ड किसी ने डाला, उस कार्ड के ऊपर लिखा था सरकश महबूब आपके कदमों में, 3 दिन में हर ख्वाहिश पूरी, बच्चा नहीं होता उनसे रुजू कीजिए, कारोबार में बंदिश. ऑल ऑफ दिस उसके आगे लिखा है डॉक्टर प्रोफेसर आमिर फलाना फलाना पूरा उसका नाम, और आगे उसकी क्वालिफिकेशन लिखा है RNP. नाउ मे बी डॉक्टर है. आई अंडरस्टैंड RNP एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. जब मैंने उसको RNP देखा, मैंने कहा यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है. जब उसको पढ़ा, उसने RNP को आगे डिफाइन किया था रूहानी मेडिकल प्रैक्टिशनर. ओके, सो NLP को भी लोगों ने कई मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ अंदाज से
डिफाइन किया है. Okay. New living principles, new learning principles, neuro linguistic psychology. Now let's pray. Now let's play. Okay. All of them. It's in fact यहाँ मेरे ऑफिस के करीब में एक ब्यूटी पार्लर होता था एक ज़माने में. उसका नाम था न्यू लुक पार्लर. Okay. Everything comes down to an NLP. So, लेकिन हम यहाँ जिस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ we are talking about न्यूरो. ओके. और न्यूरो से हमारी क्या मुराद है? हमारे 5 सेंसेस. मेरे आपके ज़हन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, we have our 5 senses. We have images using our sense of sight. We have sounds which we hear using our sense of hearing. Okay. Or auditory sense. This is visual, this is auditory. Then we have feelings that we experience using our sense of touch or kinesthetic sense. Then we have olfactory sense, sense of smell, and then we have gustatory sense. Okay? Visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. ब्रेन में हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इट कम्स थ्रू दीज 5 सेंसेस. साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट. ओके. व्हेन वी से न्यूरो, वी आर बेसिकली रेफरिंग टू दीज, द प्रोसेसिंग ऑफ दीज. जब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स की, लिंग्विस्टिक्स से यहाँ पर हमारी मुराद बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन है. और कम्युनिकेशन में 2 तरह की चीजें आती हैं. वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन एंड वी हैव non-verbal communication. Verbal communication के अंदर क्या चीज आती है? Verbal communication में हमारे words, जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, okay? किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, जो भी अल्फाज हम बोल रहे हैं. Non-verbal में हमारी टोन, हमारा लहजा, बात करने का अंदाज और हमारी बॉडी लैंग्वेज. Okay? Now ये खासी वेल नोन बात है आज कि वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, वो बहुत कम होता है रिलेटिवली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिलीवेबिलिटी ऑफ योर मैसेज. आपका जो असल मैसेज है वो यहाँ से जाता है. सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, जितना इससे पड़ता है आप कैसे कह रहे हैं. यानी वही अल्फाज एक मुख्तलिफ लहजे में जब बोले जाते हैं तो उनके माने मुख्तलिफ हो जाते हैं. मसलन अगर मैं बोलूँ अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई दानिश आपसे, अच्छा लगा आपका हैदराबाद से आए, बहुत अच्छा, कैसे आप? बहुत बहुत खुशी हुई. खुशी है नहीं है? दानिश मोबाइल छीन गया तुम्हारा यार, बड़ा अफसोस हुआ यार. आते ही छीन गया, नया मोबाइल था ना, बड़ा दुख हुआ यार. मैं जब से सुना इतना परेशान, मुझे जब नया लिया था 7S था. अफसोस है. Okay, now my words are giving a different message while my body language, my tone is giving a different message. This is called incongruence in communication. Okay, linguistics की जब हम बात करें यहाँ पे we study the effect, the impact of communication. और हम NLP में we do not talk about effective communication, we talk about effects of communication. Okay, so in simpler terms we say हमारी more than 90% communication जो है वो non-verbal है, और less than 10% हमारी जो communication है वो verbal है. Well, that's according to one study. Okay. Now, the third thing is programming. Programming से बुनियादी तौर पे हमारी मुराद वो patterns of behavior जो हम अपने जहन में प्रोड्यूस करते हैं by processing language. Okay? वो programs, वो patterns of thinking जो हमारे जहन में चल रहे हैं मुसलसल as a result of processing of language inside our brain, as a result of processing of communication inside our brain.
We say that all problems are communication problems. Okay? Interpretations we keep on making about things. We see a person and we interpret. We have an experience and we interpret. Somebody says something and we interpret. Okay? If we are interpreting in a positive way, we have a different program, different pattern, different behavior. Everything changes based on how we are interpreting whatever we are doing here. So NLP बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में एक ऐसी साइंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें ये बताती है कि हम किस तरह से अपने जहन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन करते हैं और किस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम को, बिकॉज हर वो प्रोग्राम जो मेरे आपके जहन में चल रहा है वो सपोर्टिंग नहीं होता. There are many things जो कि हमारे जहन में चल रही होती हैं which are actually like stopping us in some way, which are preventing us from moving forward in life, which are actually like बेकार में गुस्सा आ जाते जैसे, okay? समझ में नहीं आता क्या करूं. Okay? Because every program that a person is running inside his or her brain is not a useful program. So NLP is that science, that technology जो हमें that empowers us, that gives us this ability that we can change any program, alter any program, stop any program and start running a new program. ठीक है? Any questions so far? Clear? Great. Okay. थोड़ा सा historical perspective में अगर हम NLP को देखना चाहें, where it came from. Initially it was Dr. Richard Bandler, he is one of my trainers, and John Brinder, who did some work. बिल्कुल अगर आप इसके, if you go, I actually learned about NLP back in 1991, 92, or I was like searching, I was going through some experiences in my life, I wanted to know how to make some changes inside myself, change my life in many ways. And that's when I came to know about NLP. NLP, Richard Bandler, if you go into the historical perspective, I said, you will find it was Richard Bandler in early 70s, and he was a student of computer sciences. और उस ज़माने में he was like working as an editor किसी publisher का, जो कि Fritz Perls के नाम से एक publisher, एक psychologist था जिसकी किताबों को Richard Bandler edit कर रहा था. Now Fritz Perls जो था, he was one of those people who were considered magicians in their field. Okay, and he used to do some unusual, ways. He had some unusual ways of treating people, and he had created a new form of therapy which they called Gestalt therapy. जब Fritz Perls को Richard Bandler ने देखा तो Fritz Perls की, being a student of computer sciences but editing books on psychology, and Bandler having a really, really curious attitude. And that was Richard Bandler says, by the way. NLP says is an attitude. It's an attitude of curiosity, wanting to find out how things work, wanting to find out how people work. Okay, so because of his curious attitude, उस curiosity की वजह से he started, observing Fritz Perls जो है how he works with people. So जब ये खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है, जब बात करता है तो कैसे बात करता है, जब भी लोगों के साथ treatment कर रहा है तो कैसे करता है. He started observing him very, very minutely. And he said, what if I start doing what he's doing? And जिसे हम आसान लफ्ज़ों में उर्दू में कहते हैं mimicking, नकल किसी, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है. So उसने उसको observe करना शुरू किया और observe करके उन चीज़ों को अपने तौर पर duplicate करना शुरू किया. Interesting चीज़ ये हुई कि तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद रिचर्ड बैंडलर, जो कि इस वक्त 21 साल का नौजवान था, और फ्रिट्ज पर्ल्स जो कि पिछले 30-40 साल का एक्सपीरियंस रखता था एज अ थेरेपिस्ट, रिचर्ड बैंडलर ने वो रिजल्ट्स जो फ्रिट्ज पर्ल्स प्रोड्यूस करता था वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए. ओके, एंड ही स्टार्टेड क्लेमिंग आई कैन मॉडल एनीवन, और उसने अपनी स्किल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन देना शुरू की. ही यूज्ड टू टेक पेशेंट्स एंड वर्क विद देम, और जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन अपनी देता था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज में,
अमेरिका के अंदर ये होता था, और हुआ ये कि वहाँ पर एक और असिस्टेंट प्रोफेसर था उस ज़माने में जिसका नाम है जॉन ग्रिंडर। जॉन ग्रिंडर को जब पता चला रिचर्ड बैंडलर के बारे में, तो उसने कहा चल यू नो जस्ट टू ऑब्जर्व कि क्या कर रहा है। उसने जब जाकर उसको देखा, ही थॉट देयर इज समथिंग इन दिस यंग मैन। ही केम टू हिम एंड ही सेड, अगर तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, आई टेल यू हाउ यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड दे डिसाइडेड टू स्टडी सम ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट्स ऑफ देयर टाइम। सबसे पहले जिस औरत को उन्होंने स्टडी किया, उस औरत का नाम था वर्जीनिया सैटर। वर्जीनिया सैटर जो थी, शी वाज अगेन वन ऑफ दोस यू नो इट्स मैजिकल therapists of her time. She was one of those people के मिसाल के तौर पर फर्स्ट करो कि अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड आए और आकर बोलता है कि मुझे छिपकली से डर लगता है, ओके, मुझे लोगों के सामने खड़े होकर बात करने से घबराहट होती है, मुझे लोग स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने में प्रॉब्लम होती है, what would be your first question normally? What would you ask? आपको कोई दोस्त क्या डर लगता है? क्या डर लगता है? ओके, और Why you're afraid? क्यों डर लगता है? Why you're afraid? Okay, these are like normal questions we think. Now the problem with this is this: when you ask क्यों डर लगता है, and if you keep doing therapy with him for months, after several months or even years, he will know why he's afraid, but the problem is still there. In fact, he has more reasons why he's afraid. Do you understand? He'll be more convinced because he has now more reasons that tell him, you know, why he's afraid. The problem is still there. On the other hand, if Virginia Satter के पास कोई शख्स आता और कहता है इस किस्म की कोई चीज़, she would say किस शख्स से, किस जगह पे, you know, she used to ask very very precise questions, very specific questions. Richard Bandler, John Grinder ने जब उसकी इस चीज़ को नोट किया, they thought, okay, to do magical therapy, you have to ask precise questions. And they developed a model of communication जिसके ऊपर उन्होंने 2 किताबें लिखी, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1 एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 2। ये 2 किताबें बिल्कुल बेसिक सबसे पहली किताबें थीं जो कि इस टॉपिक के ऊपर लिखी गई। इस पे NLP का जिक्र कहीं नहीं है। दैट वाज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न्स ऑफ एक्सीलेंट थेरेपिस्ट, मेनली वर्जीनिया सैटर, और उसमें उन्होंने कम्युनिकेशन का मॉडल डिफाइन किया जिसे मेटा मॉडल कहते हैं। यू विल बी लर्निंग मेटा मॉडल आगे इस कोर्स के अंदर इन डिटेल। ओके, नाउ रिचर्ड बैंडलर का कोई नेबर था ग्रेगरी पीटसन, एंड वो एक मशहूर आदमी था, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। उसने रिचर्ड बैंडलर को इंट्रोड्यूस कराया एक हिप्नोटिस्ट से जिसका नाम था मिल्टन एच एरिक्सन। नाउ मिल्टन एरिक्सन जो था, ये अपने ज़माने के बेहतरीन हिप्नोटिस्ट है। इनफैक्ट इसके बारे में कहते हैं there was no one around Milton who was not hypnotized. उसकी अपनी ज़िंदगी बड़ी अमेजिंग थी। ये जब तकरीबन 19 साल का था, उसको पोलियो का अटैक हुआ। इस पोलियो के अटैक की वजह से he couldn't move. ओके, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी माँ को कि ये कल सुबह भी जो है मुश्किल है कि अगले दिन की सुबह देखें। एंड मिल्टन जो है अपने कमरे में लेटा हुआ और दूसरी तरफ से डॉक्टर से उसकी माँ से बात हो रही है, एंड ही वाज लाइक हियरिंग दिस, एंड डॉक्टर वाज सेइंग कि इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट ही विल सी द सन इन द मॉर्निंग। ओके, बट मिल्टन एक्चुअली थ्रू हिज ओन विल he survived. And Milton जो था at this stage, he started making some very fine observations. Okay. Now Milton 19 साल की उम्र में एक आदमी, एक नौजवान, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, he can't move, he's on his bed, और ये हम बात कर रहे हैं 1910 के ज़माने की, okay? And he had many brothers and sisters. So in order to entertain himself, he started observing people. And he developed very fine, very sharp observation skills. We will be doing some exercise on developing those observation skills, honing your observation skills. अब Milton जो था, इसने he studied medicine, he studied hypnosis, and he started practicing hypnosis. And he became the best hypnotist who lived during the last century. Milton Erickson जो था, उसके बारे में कहते हैं 1920 से लेकर 1980 तक 60 साल में 30,000 लोगों को उसने हिप्नोसिस के जरिए ट्रीट किया था। 30,000 people.
Okay, now that's an average of about 7 to 8 people a day. Now think about this, if you're doing something 7 to 8 times a day and for such a long time, you will become good at it. Okay? You naturally become good at it. Okay? But Milton did not just become good, he became the best. So much so that it is said, as I said, there was no one around Milton who was not hypnotized. Everyone around him was hypnotized. And Milton, उसकी quality ये थी that somebody would come to him saying, giving him his problem, मुझे गुस्सा आता है, मेरे सामने कोई vision नहीं है, मेरा अभी तक कोई idea नहीं clear हुआ, and it's like I want to develop a certain skill, and he would say, तो मेरे ऑफिस में यहाँ पर बैठे हुए हो और एसी चल रहा है और एसी की ठंडक हो रही है और ये दीवार पर्पल है और ये दीवार ऑफ वाइट है और कुर्सी काली है और कुर्सियाँ कई तरह की होती हैं एंड इधर उधर की बातें कर रहे हैं, when is he going to come to the topic? Only to find that the problem or the ideas that you went for, the problems are gone, the skills have improved, nobody had any idea what he did in, while you were listening to his stories. He was famous as a storyteller. In fact, इसकी किताब है Milton की, a very good book. इसका नाम है Teaching Tales of Milton H. Erickson. My Voice Will Go With You. That's the name of the book. My Voice Will Go With You. Teaching Tales of Milton H. Erickson. Okay, somebody asked Milton, how did you make people change so much so quickly? He said, because they allowed me to tell them stories. Okay, he used to tell lots of stories. So and there are many stories Milton की by the way. एक दफ़ा Milton जो था, उसकी तबीयत खराब हुई तो वो डॉक्टर के पास गया. जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उससे कहा that you need to change the state you are in. Change the state. Milton की बीवी थी, बेटी, वो घर जाके उसका तो सारा सामान इकट्ठा किया, गाड़ी में सामान डाला, and then they started going to a different state. And as they were like traveling, some say they went like 20 states, some say they went 15 states, some say they went 10. And as they were going from one state to the other, they could hear the sounds coming from outside, sometimes whistles coming from here and there, shouts of people going from here and there. They feel the temperature of the surrounding changing, relaxing automatically. And as they were going through all of those states, maybe after 5 states or maybe 4, perhaps 3, maybe 2, there was this sound that told them, now this is where I want you to stay. And then, Milton saw there's this home, and they went inside. And then when they went inside that home, they saw in the back, there's a lot of stuff there. Old pictures, movies, old movies, movies without sounds, old tapes without movies, records, old stuff left by people. So Milton looked at all of that and he said, we need to clean this up. And they began to clean. So it's like जब मेरा introduction NLP के हुआ था, I actually attended a program years ago. I first read a book about NLP. One of my friends then told me that there is a person who has come to Pakistan and he's doing a course, a 3-4 days course on NLP. It was an introductory kind of course. I attended that course. उस ज़माने में I was in sales. मैं एक कंपनी में टेलीफोन एक्सचेंजेस वगैरह जो होते हैं, टेलिक्स मशीन्स उस ज़माने में होती थी, कंप्यूटराइज्ड टेलिक्स मशीन्स. I used to sell those things. तो there was one particular client जिससे मैं मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था. मैं जाता and अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, कॉल करता अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, जाता तो वो MD साहब की सेक्रेटरी टहला देती. But I was like totally focused. I just wanted to meet that person. And there is this interesting thing that operates in this world. It's like whatever you focus on, you somehow attract in your life. Okay? What happened was when I was in this training, and there were about I think 35-40 people in that group, और उन्होंने वो 5-6 लोगों के
ग्रुप्स बना दिए थे. Now one of the person in my group was that particular person that I wanted to meet. Okay, and he was the head of organization, that organization. Okay, अच्छा अब ऐसे ही बीच में एक एक्सरसाइज के दौरान बात हो रही थी and he said कि कामरान तुम क्या करते हो? And I said कि I sell these telephone exchanges. He said really? यार हमारी कंपनी में हमें टेलीफोन एक्सचेंज की जरूरत है. Why don't you come and meet me? I said अच्छा. I didn't tell him actually. I have been trying for so long. I said अच्छा आपको जरूरत है? Okay. So he gave me his personal number and he said यार ठीक है अभी like let's meet on Monday. So Sunday को ट्रेनिंग खत्म होनी थी. Then I said okay. I called him on Monday and जब मैंने Monday को कॉल किया मैं वहाँ पर गया. And it's like so उनसे मुलाकात हुई. Then he showed me the old telephone exchange that he was using. You know, पुराने ज़माने में जो telephone exchange थे, it was like एक इतना बड़ा सा डब्बा सा रखा हुआ था. Operator क्या गया, it was like यहाँ से निकाला, इधर लगाया, इधर से निकाला, उधर लगाया. अब क्या होता? यहाँ की कॉल वहाँ पहुँच गई, वहाँ की कॉल वहाँ पहुँच गई. There was like call always a mess up. Okay, and then they had this old wiring. So and then he took me to the basement. Inside that basement, when we went inside that basement, you know, it was a big room. और वहाँ पर जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ था पुराना टेलीफोन एक्सचेंज जो there was lots and lots of noise inside the basement. Okay, and I asked him it was so loud inside the basement. You know, it was even difficult to talk to each other. And I said, and his name was Abdullah. I said, Abdullah bhai, how long have you been using this? He said, since the beginning of the organization. The inception of the organization. And I said, okay, I think we need to make some changes here first, because the wiring, जो पुरानी की सारी wiring हुई है, it's an old wiring. Okay. So I said maybe I need to send some of my company's technical staff who can come and give you an estimate of यहाँ पे wiring वगैरह change करनी होगी. He said, great, go ahead, no problem. Okay, because we are planning to install a much more sophisticated system, it's good that we get rid of all the wiring first. And that's what we did. After all the approvals and everything, the first thing we did was we started like cleaning up inside gradually. It took about a week or so. So मेरी जब उससे introduction हुई, as I said, like NLP, that was like the beginning of like my learning about NLP. This was about in 1992. Okay, and I was like learning about this. My father had passed away, and मेरे अब्बू का जब इंतकाल, my father was an artist by the way. Okay, and मेरे अब्बा का जब इंतकाल हुआ, हमारे घर में उस like एक अलमारी थी. उस अलमारी के अंदर there were like old paintings, unfinished paintings. Being an artist, probably किसी ने उनको दिया, and then he started working on it but couldn't finish it for some reason, or maybe he didn't like it, so he left it. And there were and हमारे घर में एक पुराना टेप रिकॉर्डर होता था. उस पुराने ज़माने में स्पूल वाले रिकॉर्डर होते थे, उसमें आप यहाँ पे टेप लगाते थे, यूं पूरा घुमा के हेड में से गुजरता है, यहाँ पे आप ब्लैंक लगा देते थे, फिर उसमें and my father used to play some songs on it. I remember when I was about like maybe 5 or maybe 6 or maybe younger. I used to hear अब्बा मेरे उसमें song like एक मना डे एक इंडियन सिंगर होता था, उसका होता था मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे फूल कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या. And I used to think, I used to imagine as if my father is singing those songs for me. At this stage you have a imagination that can take you anywhere. Okay, now, and then we also had this 8mm video projector hota tha. I still have that camera with me, so it doesn't work anymore, but I still have it. It's just an antique now. Okay, uske upar kya hoता है, like you